Okay. So bank to share application account 2,76,000, right? And then that's 92,000 shares at rupees 3 each, correct? And then you are allocating it. I already gave you the table for the allocation. So you will reverse the share application account. You will transfer face value of the shares and the shares company wants to issue to share capital. Company कितने shares issue करना चाहती है? Company 60,000 shares issue करना चाहती है. So 60,000 into 3. That much will be transferred to share capital account, right? So how much are you transferring to share capital? 1,80,000. Are you sure 92,000 into 3 is 2,76,000? Because they have taken application and allotment together. You don't do that. You do application separately and allotment separately. So 92,000 into 3 gives us, that is correct, 2,76,000 only it comes to. Okay? So 92,000 into 3, 2,76,000 we receive against the first entry. Then the second entry. How did they get 3 grams? They added. They've added it actually. We will pass the separate entry, okay? You pass the separate entry. So, 1 second, let me just open the table what I gave you the other day. It will be more easier for us to identify the numbers. Yes, this is the table? Yes. Alright. So, the first entry is this one, correct? Bank account debit to share application account 2,76,000. Then next entry, share application account debit 2,76,000 to share capital 1,80,000 to share allotment 90,000 to bank account 6,000. Correct? This is the entry for transferring for pro rata allotment. Now the third entry, how much allotment money will you due? Share allotment account debit to share capital account. What is the amount? 6,000. Share allotment to share capital. See, the company wants to issue 60,000 shares and allotment money is at 2 rupees. So 60,000 into 2, 1,20,000. So share allotment to share capital 1,20,000. Correct? Due the allotment money. That's your third entry. Now fourth entry, receive the allotment money. How do you receive the allotment money? Bank account debit to share allotment account. But while receiving the allotment money from this 1,20,000, you will subtract this 90,000 which you have already adjusted. So 1,20,000 minus 90,000, how much money are you going to receive? More 30,000. So bank account debit to share allotment account 30,000. Clear? There is no calls in arrears, there is no calls in advance, nothing at all. It's just a simple question. Simple straightforward question. Due the first call. First call पे कितना due करोगे? 60,000 into 5. 3 lakh rupees first call पे due कर देंगे. So share first and final call account debit to share capital account. 3 lakh. And then receive the money bank to share first and final call account. 3 lakh. Because there is nothing which has been adjusted against the calls and advance. Is this clear? So the second entry, what I told you, they have actually broken it up into 3 parts. But we will pass it together. We will not break it up. In exam, you're supposed to pass it as a one common entry only. That is your second entry. No data allotment. Now today I'm going to teach you forfeiture. Can we do more of these? This will be done with forfeiture again. So whatever we just did, this table thing, this will be there in the next question. Like all the questions are going to be like this only. But now the last few entries will be add-on with forfeiture. Okay. So we'll learn the concept forfeiture and then we'll again take up a question where we're going to prepare this table and do oversubscription with forfeiture. Fifty heading, forfeiture of shares. Forfeiture of shares.
now what do we mean by share forfeiture? What is the meaning of share forfeiture? Yes? Rejecting the shares. No, not rejection. Cancelling. Cancelling. Yes. Cancelling word is different and rejecting word is different. Why do we cancel the shares? Why are the shares cancelled? What is the reason for this kind of a cancellation? Money is not Money is not paid. Exactly, it's because of the continuous calls and arrears. तो क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो पैसा नहीं पे कर रहे. The company is calling them, pay the allotment money, pay the first call money, pay the second call money. Calls and arrears can be on allotment, can be on first call, can be on second call. Yes? So there is a continuous follow-up by the company, but the shareholders are still not paying. So what will company do? Company will not take it as a bad debt. कि अच्छा ठीक है नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं जाने दो. No, company can't do that. What will company do? Company will cancel the share of that particular shareholder. Understanding? So that word is known as forfeiture. So now, in case of forfeiture, we are going to pass the journal entries and we are going to be passing it with the help of two methods. Okay? So let's make a chart for this. Let us analyze both the methods first. When securities premium is received, when securities premium is not received, when securities premium is received and when securities premium is not received. Okay. Now, what does the Companies Act says? The Companies Act says that if the security premium is received by the company, okay, then it cannot be cancelled or returned. The premium, we are talking about premium amount. Premium amount cannot be cancelled in the books, it cannot be reversed in the books, or it cannot be even returned. ऐसा आ गया तो आ गया, रख लो. ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया. Company will not return this money. This is the provision given as per the Companies Act. Okay, so if the premium is received by the company, then it cannot be cancelled or returned by the company. Company can keep that money. Okay, big the bracket में. Simply, what does it mean? Company can keep this money. ये हमारे easy reference के लिए कि हाँ कंपनी है पैसा रख सकती है. एग्जाम में लिखा है ऐसा. Okay. Now, obviously, if company can keep this money, what are we going to do here? Here we are going to actually not reverse the securities premium, but बाकी जो चीजें हैं वो तो रिवर्स करने पड़ेगी. बाकी चीजें क्या हैं? What is it? Share capital. You will reverse the share capital account over here. Why are we reversing the share capital account? Because you are cancelling the shares. अगर आप शेयर होल्डर की शेयर कैंसिल कर रहे हो तो उसके जो कैपिटल है वो आपको रिवर्स करने पड़ेगी. You credit the share capital every time. So when you forfeit, you will debit the share capital now. Reverse the share capital. And with what amount are you going to reverse the share capital? You're going to reverse it with the number of shares which you are forfeiting. Obviously, जितने shares forfeit कर रहे हो उतने से debit करेंगे ना. So number of shares forfeited into called up value. Into called up value. What is called up value? Called up value का मतलब ये कि आप किस stage के बाद forfeiture कर रहे हो. Up till that stage you will take. Now suppose if you are forfeiting after first call, then you will take called up value as application money, allotment money, first call money. Suppose you are forfeiting after allotment money. What is the called up value? Application plus allotment. If you are forfeiting after second call, what is the called up value? Application plus allotment plus first call plus second call. So suppose application का पैसा है, we are talking like
For an example, you say application is 2 rupees, allotment is 3 rupees, first call is 5 rupees, okay, and second call is another 5 rupees. The company has issued the shares at 15 rupees. तो अगर मैं first call के बाद forfeit कर रही हूँ, तो what's your called up value? 2 plus 3 plus 5, like that. Clear? So called up value is the value up till which, after the stage which up till the stage you have actually called up the shareholder. लेकिन पैसा नहीं दिया तो इसलिए आप उनको forfeit कर रहे हैं. Clear? To what? You're not going to debit the securities premium here because the Companies Act says that you will not reverse the securities premium. So debit नहीं करेंगे securities premium को. Now, to share forfeiture account. To share forfeiture account. This we will always find out as a balancing figure. We will always try to keep this as a by default figure. आप उसको by default figure balancing figure रखोगे हमेशा तो आपका आंसर करेक्ट आएगा. If you try to get into calculating this number, you can go wrong. तो करना क्या है? फिर क्रेडिट कैसे आएगा? डेबिट तो चलो यहाँ आ गया. क्रेडिट कैसे आएगा? There is another credit. You're going to reverse calls in arrears now. Remember I had told you if you're debiting calls in arrears, you're supposed to credit it sometime. Either you will credit it when you're receiving the money against calls in arrears, bank account debit to calls in arrears. Otherwise, you will credit the calls in arrears in case of forfeiture. Okay? And calls in advance, we credit calls in advance originally. When do we debit the calls in advance? When you actually receive the money. In the first call and the second call, you debit calls in advance because that is the time you're receiving the money. Correct? So here, when you are crediting calls in arrears, you have already debited it in the above entries. So simply you can just take the total of those calls in arrears, or you can calculate it also if you want. Number of shares forfeited into value not paid, unpaid value. So if the shareholder hasn't paid us allotment plus first call, you will debit that much amount. What happened, Murja? Calls in arrears में कौन सा पैसा जाता है? Calls in arrears में वो पैसा जाता है जो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ, money not received. तो शेयर forfeiture में फिर बैलेंसिंग फिगर कौन सी आ जाएगी? Money which is received. जो पैसा कंपनी को आ चुका है वो आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? शेयर forfeiture में. और जो पैसा कंपनी को नहीं आया है वो आपने ऑलरेडी डेबिट किया था calls in arrears में and now you are reversing it. So money is not received, money received हो गया ना credit का total, and that will tally with your debit share capital because that is the total money received and unreceived. तो जो called up value होता है, this is money received plus money not received. This is received plus not received का total. फिर उसमें हमने bifurcate कर दिया received and not received. So obviously the journal entry will definitely tally here. तो आपको क्या करना है? Rather than calculating the share forfeiture account, simply calculate it as a balancing figure. Because in the advanced questions becomes very tricky and very complicated to calculate share forfeiture because there are going to be different shareholders doing different kind of a default. They'll give you A ने इस call पे पैसा नहीं दिया, B ने allotment पे पैसा नहीं दिया, C ने ऐसा नहीं किया, D ने calls in advance दे दिया. So there'll be so many situations coming up. So it's better that we calculate share forfeiture as a balancing. Understood this entry? Share capital to share forfeiture to calls in arrears. Simple. Entry simple है, लेकिन amount calculate करना simple नहीं है. Amount हम सीखेंगे कि कैसे calculate करना है. First remember the entry, then later we will learn to calculate the amount. Clear? Now, when we talk about this particular case, when securities premium is not received, it's going to be exactly the same entry what we just wrote, but with a debit of premium. यहाँ पे आपको premium का पैसा नहीं आया. अच्छा ये इसका मतलब क्या होता है कि प्रीमियम का पैसा आया और प्रीमियम का पैसा नहीं आया? It simply means कि company is issuing shares, some company is issuing shares at a premium. Now suppose आपको प्रीमियम का पैसा रिसीव कर रहे हो अलॉटमेंट के साथ, लेकिन अलॉटमेंट पे calls in arrears हो गया, तो प्रीमियम का पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ, and this situation comes up. Okay, and there is a premium with first call, with allotment also, with first call also. लेकिन allotment का पैसा आ गया, first call का पैसा नहीं आया.
अंडरस्टैंडिंग? तो अलॉटमेंट पे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आया तो आप अलॉटमेंट का सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं करोगे। फर्स्ट कॉल का अगर पैसा प्रीमियम के साथ आना था लेकिन नहीं आया तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करोगे। सो इट सिंपली मीन्स व्हेन द मनी when the securities premium is received, you will simply keep that money, you will not debit that money. And if the securities premium is not received, तो आप उसको डेबिट कर सकते हो क्योंकि आपने पैसा अभी तक रिसीव नहीं किया। इट कैन बी अगेंस्ट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। प्रीमियम किसी भी स्टेज में हो सकता है। तो अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम आया है तो एप्लीकेशन में तो कभी कॉल्स एंड अरियर्स होता ही नहीं है, राइट? तो एप्लीकेशन के साथ अगर पैसा आया है एंड देयर इज नो प्रीमियम विद अलॉटमेंट कॉल्स एंड कॉल्स, तो यू दिस सिचुएशन विल बी एप्लीकेबल दैट मनी सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी हैज बीन रिसीव्ड विद application, okay, but you will still not debit the premium account क्योंकि you're not supposed to refund that। तो वो पैसा पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? वो शेयर फॉरफीचर में चला जाता है। शेयर फॉरफीचर इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी, तो कंपनी रखेगी अपने पास, वो कैपिटल रिजर्व में बाद में ट्रांसफर कर देंगे पैसा लेटर ऑन इन द बैलेंस शीट। बट अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आता, सपोज प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ आना था और अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर्स हो गया और प्रीमियम का पैसा नहीं आया, then this particular entry. So what is the entry now? Share capital account debit securities premium account debit to share forfeiture account and to calls in arrears account. Yes? Got it? So here you will debit the premium. Premium is, when the premium amount is not received, debit the premium. तो ये आपको याद रखना है।
apply this forfeiture also now in our full length questions. So जो आप कर रहे थे वो तो करोगे वैसे ही. Bank to share application to share capital, to share allotment, to calls in advance, to bank, share allotment, to share capital, bank to share allotment, share first call to share capital, bank to share first call. ये तो करने ही वाले हो, ये तो आने ही वाला है. And then what you're going to do in these entries, you're going to club securities premium, calls in advance, calls in arrears also. Securities premium कहाँ जाता है? Securities premium ड्यू की एंट्री में जाता है, राइट? ड्यू की कौन कौन सी एंट्री होती है? ट्रांसफर वाली एंट्री जो शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करता है. दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. So that's your second entry, that's your third entry, that's your fifth entry and that's your seventh entry. Correct? When you say to share capital तो उसमें आप करते हो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो टू शेयर कैपिटल करते वक्त आपको टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करना है. क्लियर? When you debit calls in arrears, जब आप बैंक अकाउंट डेबिट करते हो तो उसके साथ आपको calls in arrears भी डेबिट करना है. यस क्रिश, सो रहा है क्या? ये समझ रहा है? हाँ. Okay, processing it. And when you credit calls in advance, in the second entry you credit calls in advance. When we transfer share application money against the pro rata allotment, also when you receive the money in advance, suppose for an example you are receiving first call and second call money with allotment money, then you say bank to share allotment to calls in advance. तो calls in advance भी receipt वाली entry के साथ आता है and calls in arrears भी receipt वाली entry के साथ आता है. But securities premium receipt वाली entry के साथ नहीं आता है. Securities premium will always come with share capital. To share capital, to securities premium. ये कुछ लॉजिक्स एंड ट्रिक्स है जो आपको याद रखनी है इस चैप्टर के लिए. ये तो सब जंबल अप कर दोगे when you practice a full length question. So that much practice you guys have to do that you are able to segregate each and every amount and each and every entry correctly. Clear? And then obviously interest on calls in arrears and interest on calls in advance, that is overall a separate entry. तो उसमें mess up करने का कोई chance ही नहीं है. वो तो आपको अलग से ही pass करनी है. Yes? And then going further, when we talk about forfeiture, this entry will come anyway separately. तो इसका वो टू करना है कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है कि किसके साथ करना है वो सब कुछ सवाल नहीं है. This is overall a separate entry where you're going to reverse the share capital and you're going to reverse the calls in arrears and you're going to create share forfeiture. Right? Okay. Come to question number. पहले थोड़ा सा बेसिक लेते हैं और शेयर फॉरफीचर पे होल्ड लेके आते हैं. जिससे का बेसिक बात. कम टू क्वेश्चन नंबर. X Limited invited applications for 20,000 shares. X Limited invited applications for 20,000 shares. 10 each. Of rupees 10 each. X Limited invited applications for 20,000 shares. So company wants to issue how many shares? Company wants to issue 20,000 shares of rupees 10 each payable as under 3 per share on application, 3 on allotment, 2 on first call, 2 on final call. So this is the bifurcation we have. For final call was not made by the company. Final call अभी तक कंपनी ने नहीं किया है. So you will not pass the entry for the final call. If the company has not made any call, okay, then you don't pass the entry. Next, an applicant who had been allotted 100 shares failed to pay the allotment money and the first call money due from him. So what will you create? Calls in arrears for 100 shares.
His shares were forfeited after the first call and were immediately reissued at rupees 8.5 per share. So now, after going later, what we're going to do after all the entries, after the first call, we're going to forfeit the shares. Okay? So जब लिखा है share forfeiture का, उसी stage पे आपको share forfeit करना है. When it is written that shares are forfeited after allotment, you need to pass an entry after allotment. If it's written share is forfeited after first call, you need to pass an entry after first call. When it's written share is forfeited after the final call, you're supposed to forfeit it after the final call. Do as the question says. अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें. ठीक है? जैसा steps बोल रहे हैं वैसे ही step follow करो. Make necessary entries in the journal and prepare the opening balance sheet of the company. So here we're going to again practice the balance sheet as well. ठीक है? चलो, let's start. Is there any oversubscription here? No, there is no oversubscription. I'm not doing oversubscription right now. I'm practicing a simple question with calls in arrears and forfeiture without oversubscription. धीरे 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 आगे बढ़ेंगे. एकदम से अगर मैंने एडवांस क्वेश्चन पकड़ लिया तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. Make a journal, all of you. Can I know this question is which one in your textbook? 22nd. 20? 22nd. I got 27. Alright. Made a format? They're not even given with the dates and all, so you can just leave it blank. Or you can write down 1, 2, 3, 4. Okay, so what is the first journal entry? Pooja, what is wrong with you? Why are you not paying attention? You have made a blunder in your paper, you know that. And now I'll be sending those marks to your parents. You handle it now. Focus करो, पढ़ाई करो, time pass नहीं करना. Accounts is not going to be easy, trust me. अभी आगे चल के और hard होने वाला है. Okay. So what is the first entry? Bank account debit to what? To share application account. Okay. चलिए लिखिए. Bank account debit to share application account. Okay. ब्रैकेट में लिख दो कितना पैसा आ रहा है कितने शेयर्स पे 20,000 into 3 rupees, not 10. 10 is the total value. Bifurcated into किसने बोला 10? Bifurcated into 3, 3, 2, 2. तो हर स्टेज पे आपको इंडिविजुअली बुक करना है. ओके. 20,000 into 3. एप्लीकेशन का पैसा लेना है. ओके. So how much? 60,000 and 60,000. Write down the narration on your own. Being application money received, and do write down the narrations. Being application money received. Being application money received. Being application money received. Now reverse it. Share application debit to share capital. As there is no pro rata allotment, as there is no premium, we will not be crediting to securities premium or to share allotment or to calls in advance or to bank. है ना? All that won't come. Straight away simple entry. Write down the narration. Being application money transferred. Being application money transferred. Being application money transferred.
Go ahead, pass the remaining entry for the road.
क्या है? Done? क्या हुआ? शेयर कैपिटल फोर फीचर मैं करवाती हूँ, वेट, फोर फीचर तक कर लिया, हाँ अब till फोर फीचर you guys were supposed to do. Done? So you booked the calls in arrears with what amount? 300 to Calls in arrears is booked with 200 in which stage? First call. First. And allotment के साथ 300, right? Okay. Now let's pass the share forfeiture entry. Final call due नहीं करना है, okay? Share forfeiture की क्या entry होगी? All other entries have come here. Now share forfeiture. So for share forfeiture, what you have to do first, you have to reverse the share capital account. Then there's no premium in this question, so forget the premium part. Okay? Then you have to reverse. You have to create share forfeiture account, and then you have to reverse calls in arrears. So calls in arrears is created only for this particular shareholder. There is no other shareholder, right? है ना? So that is 300 plus 200. So calls in arrears तो आपके पास already 500 से credit है. अब debit कितना होगा? It will be number of shares forfeited into called up value. How many shares are we forfeiting? 100 into what is called up value? कहाँ किस stage के बाद आप forfeiture कर रहे हो? You're forfeiting after first call. So application money plus allotment money plus first call money is your called up value here. So it is 3 rupees plus 3 rupees plus 2 rupees. That is 8 rupees is your called up value. So 100 into 8. 800 is your called up value, and then the balancing figure is 300. Got it? और अगर आपको शेयर फॉर फीचर भी फाइंड आउट करना है तो कैसे कर सकते हो? देखो ये 300 किससे टैली होगा? चेक 100 इनटू आपको कौन सी स्टेज का पैसा आया है? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया है, और अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा तो इधर चला गया. So money which is received is transferred to share forfeiture. Money which is not received is reversed to calls in arrears. 800. टोटल 800 रुपये आना था फर्स्ट कॉल तक, जिसमें से 300 आ चुका है, 500 नहीं आया है, वो कॉल्स इन अरियर्स में डेबिट क्रेडिट होके जीरो हो चुका है. Is that clear? Write down the narration. Being 100 shares forfeited. Being 100 shares forfeited. Being 100 shares forfeited. That's it. अब इसके बाद क्या करना है? I'll teach you further what they have said. Look, his shares were forfeited after the first call and were immediately reissued at 8.5 per share. अब reissue की entry सीखेंगे. आइए. reissue का मतलब क्या होता है? वापस issue कर देना किसी और शेयर होल्डर को. So obviously you are receiving the money.
So debit the receiver, debit the bank account, and credit what? Again, share capital. Again, you're going to create another share capital account. So bank account debit to share capital account. Now this is the basic entry, okay? Now if the shares are issued at a discount, then we are supposed to debit the share forfeiture account. And if the shares are reissued at a premium, then we are supposed to credit the securities premium account. तो यहाँ पे मुझे बताइए आपने कितने का शेयर कितने में रीइशू किया? आपने 8 रुपए का शेयर 8 रुपीस का शेयर 8.5 में रीइशू किया. हाउ 8? आपको ये कॉल्ड अप वैल्यू देखनी है कि इस शेयर की, ये जो शेयर है 100 रुपीस, इसकी वैल्यू कितनी है? 8 रुपीस. Called up value is 8 rupees and it is reissued in 8.5. So it is reissued at 0.5 premium. So 8 रुपए का शेयर हमने 8.5 रुपए में इशू किया. Okay. So what is the money are you going to get? 100 into 8.5. 850 rupees you are going to receive. Yes. To share capital, what is transferred to share capital? Always face value is transferred. And to securities premium, always premium value is transferred. 100 into 0.5. Correct? How do you get 0.5? 8 rupees का share at 0.5. 0.5 premium. 50 rupees. Is this clear all of you? यहाँ पे लिख दो, नरेशन में लिख दो. Being rupees 8 100 shares of rupees 8 reissued at rupees 8.5 per share. 100 shares of rupees 8 reissued at rupees 8.5 per share. reissue वाला इसके अंदर ड्यू का एंट्री नहीं डायरेक्टली बैंक से. इसमें ड्यू का एंट्री रीइशू के बाद कोई ड्यू नहीं करना, डायरेक्टली पैसा ले लो. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दैट कैन बी ड्यू इट एंड रिसीव इट डायरेक्टली. अब इसके बाद आपको क्या करना है? Okay, so this you understood why we credited premium. If you are reissuing at a premium, you have to credit the securities premium, and securities premium in this case will come with the bank entry. So this is an exception, okay? ये reissue का exception है. ये reissue का exception है. बैंक की एंट्री के साथ आपको securities premium create करना है. Only for reissue. Okay? अब इसके बाद लास्ट एंट्री क्या है? लास्ट एंट्री ये है कि ये जो शेयर फॉरफीचर में आपके पास कैपिटल प्रॉफिट पड़ा हुआ है, इसका क्या? Rest everything has been reversed. You have debited calls in arrears, you have credited calls in arrears. You have debited share capital, now you have credited share capital. Received the money at premium, bank account debit, everything is perfectly done. What about this share forfeiture account? ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, इसको आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा. कैपिटल प्रॉफिट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो ये आपने क्रेडिट किया है, तो ट्रांसफर करते वक्त अब क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. एंड वी हैवंट यूटिलाइज्ड इट. हमने यहाँ पे शेयर फॉरफीचर को डेबिट नहीं किया. सो द एंटायर अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल. आज द लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, also sorry कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ठीक है? कितना पड़ा है इसमें पैसा? 300. So we'll simply transfer 300 to capital reserve and write down being profit on share reissued transferred to capital reserve. ये reissue के वक्त reissue के बाद हमें एंट्री करनी है. दिस इज बेसिकली द प्रॉफिट व्हिच इज अर्न्ड ऑन reissue. सो आफ्टर शेयर forfeiture you reissue, and after that whatever money is remaining in the share forfeiture you transfer it to the capital reserve. Clear? Try making the balance sheet. All of us know, right, how to make the balance sheet. Note number 1, share capital. We've already learned it in financial statements. Ishika, I'll teach you, okay?
Isa? तेरा नाम सुना बाहर तेरा नाम सुना मेरा नाम बोलूँगा ना उसको क्या बोलेंगे सब लोग किसी ने एक पढ़ाई दो तीन जितना नहीं होता रेशोस खराब किए गए थे मैंने सब कुछ खा लिया सर कुछ नहीं कर लिया बाकी का कंपैरेटिव कॉमन I didn't do that much and I just gave it as for the sake of it because like I wanted to go out actually so I was already like yeah. बाकी सब करेक्ट होगा बस रेशो रेशो पढ़ाई की रेशो जो था ही But she didn't have cigarette after some like I wasn't in there for the Nishka, have you done balance sheet in school? Do you have an idea about it? No idea. अभी financial statements पढ़ाते ना school में? Nothing. The entire lecture you were absent. I was absent for one. Oh. So that part was missed out.
And now they'll be starting this issue of shares in school. They haven't started yet, right? So see, obviously right now we will not be covering up the entire financial statement, but the share capital, what we're talking about, is the first part of the financial statement. That is like your note number 1 of the financial statement. So that I can teach you how it can be prepared. Also in this particular schedule, they have asked us the balance sheet. So from the journal entries, whatever things we can pick up, we can put it accordingly. Like share capital mein, all your capital will go. Then we are receiving money also, bank account debit every time. So we can also create cash and bank balance. Then there is a capital reserve also we have created. So we can also create reserves and surplus. Capital reserve goes to reserves and surplus. Securities premium goes to reserves and surplus. तो इस तरीके से हमें journal entries को study करना पड़ेगा and accordingly we have to prepare a balance sheet. Okay, so all of you check. देखो हमारे journal क्या क्या है. Bank to application, application to share capital. So obviously we are creating bank. We are putting bank under cash and bank balance and we are transferring share capital to share capital schedule. Application cancel. Allotment to share capital, bank calls in arrears to share allotment. तो बैंक का पैसा cash and bank balance में जाएगा. Okay, share capital का पैसा share capital में जाएगा. But calls in arrears that will be subtracted from your share capital का schedule. ये माइनस करना है वहाँ जाके calls in arrears अपने को. Okay, माइनस करना पड़ता अगर forfeiture की एंट्री नहीं होती. बट लेकिन आपने सेम अमाउंट का कॉल्स इन अरियर्स रिवर्स भी कर दिया. तो आपने कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट भी किया 500 से, आपने कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट भी किया 500 से. सो नाउ यू डोंट हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. अगर सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स डेबिट करते और फॉरफीचर नहीं करते, देन यू वुड गो टू द बैलेंस शीट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द शेयर कैपिटल शेड्यूल, क्योंकि वो डेबिट में दिख रहा है. बट अगर डेबिट करके क्रेडिट कर दिया तो क्या हो गया? जीरो हो गया. तो फिर बैलेंस शीट में से माइनस नहीं होगा. सिंपल. उसके बाद फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू फर्स्ट कॉल. तो बैंक का पैसा कैश एंड बैंक बैलेंस में, शेयर कैपिटल में कॉल्स इन अरियर्स नथिंग बिकॉज इट इज बीइंग रिवर्स्ड. अब देखो फॉरफीचर का क्या करना है. आपने शेयर कैपिटल को रिवर्स कर दिया है ना, और आपने कॉल्स इन अरियर्स को भी रिवर्स कर दिया और आपने शेयर फॉरफीचर क्रिएट कर दिया. बाद में हमने शेयर फॉरफीचर को रिवर्स करके कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर दिया. तो बेसिकली आपको फाइनली अब कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाना है, बिकॉज शेयर फॉरफीचर तो डेबिट क्रेडिट हो गया, जीरो हो गया. तो ये जो कैपिटल रिजर्व है कहाँ जाएगा? दिस विल गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट. ऊर्जा, कितना टेंशन है जिंदगी में भाई. एंड उसके बाद आपने देखो प्रीमियम भी क्रिएट कर रखा है. सो प्रीमियम विल आल्सो गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस. सही है. उसके बाद ये जो बैंक का पैसा आ रहा है, दिस विल गो टू कैश एंड बैंक बैलेंस. नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? चलो बताओ मुझे आदित्य बैलेंस शीट बना रहा है ना. ये जो शेयर फॉरफीचर है ये कहाँ डालेगा? सॉरी, शेयर फॉरफीचर तो डेबिट क्रेडिट हो गया. आई एम सो सॉरी. ये जो शेयर कैपिटल है ये किसका क्या करोगे जो आपने शेयर कैपिटल डेबिट कर दी? शेयर कैपिटल में डालेंगे. शेयर कैपिटल में जाके क्या लिखोगे? Issued and fully paid as income. मैं देखना चाहती हूँ तुम लोग मतलब जर्नल को कितने अच्छे से समझते हो. देखो ध्यान से, आपने शेयर कैपिटल को यहाँ पे डेबिट किया 800 से, और एट द सेम टाइम आपने शेयर कैपिटल क्रेडिट भी तो कर दिया ना 800 से. क्या ही इफेक्ट रह गया उसका? जीरो हो चुका है वो. दिस विल नॉट गो टू द बैलेंस शीट. सिमिलर वे कॉल्स इन अरियर्स आपने क्रेडिट किया, कॉल्स इन अरियर्स आपने डेबिट किया, नो इफेक्ट इन द बैलेंस शीट. शेयर फॉरफीचर आपने क्रेडिट किया, शेयर फॉरफीचर आपने डेबिट किया, यस, नो इफेक्ट इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व का इफेक्ट जाएगा, बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम का इफेक्ट जाएगा. इज इट क्लियर? The accounts which have been debited and credited and became zero, how can you give the effect in the balance sheet? That's not possible. तो आपको तभी मैं बोल रही हूँ कि पहले एनालाइज करना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज को, and then accordingly you have to prepare the balance sheet. ऐसे अपने मनमर्जी बैलेंस शीट हम नहीं बना सकते. We need proper numbers to be clubbed in the balance sheet. Clear? आप बनाइए बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का देखो फॉर्मेट क्या होता है, जिसको नहीं आता look at the board. First you will write down balance sheet of
presented as at, we are not given with the this thing now, year, so just leave it blank, at dash, some 31st March. First we have to prepare the face of the balance sheet and then we have to prepare notes to accounts. Okay? What all columns are there in the face of the balance sheet? We have previous year column, we have current year column, we have a note number and a particulars. Correct? Right. Particulars, note number, current year rupees, previous year rupees. Why I am writing CY and PY? Because we don't have year. है ना? हमें साल नहीं पता. अगर साल लिखा होता तो we could have written that. What is the first thing which comes in the balance sheet? 1. बताओ जल्दी. Equities and liabilities. Equities and liabilities. We will write down equity and liabilities. That's a better word. है ना? Equity लिखो. Equity and liabilities. Okay? उसमें first one. Shareholders fund. Always the first will be. Okay, Nishika. This is how the balance sheet starts. Roman number 1, equity and liability. This is your heading. जैसे हम पहले जब बनाते थे balance sheet, left hand side should be liabilities, right hand side should be assets. Now it is equity and liabilities. And then that, shareholders funds. In shareholders funds, we have share capital. हमेशा share capital का बनेगा note number 1. And in this particular question, we also have reserves and surplus because we need to transfer securities premium and capital reserve to reserves and surplus. Securities premium भी reserve होता है. We have studied that in the financial statement chapter also. है ना? Do we have any non-current liabilities, any current liabilities? Nothing. So simply total. Okay? इसके बाद non-current liabilities and current liabilities is something again in advance. देखो उसमें 4 heads and 4 heads. That we will see later. Second, what? Assets. Under the assets, first is non-current assets. But do we have anything related to non-current assets? Nothing is there, so don't even write it. अगर कुछ है नहीं तो there is no point in writing. But we have current assets because we have cash and bank balance. So cash, याद है आपको पिछले साल भी हम cash in hand and cash at bank current assets में लिखते थे. अभी भी हम cash in hand, cash at bank current assets में लिखेंगे. But now we don't call it cash in hand and cash in bank. We call it cash and bank balance. तो लिखिए current assets. Under the current assets, we don't have any other head, only cash and bank balance. Do not write it as cash and cash equivalents. Cash and cash equivalent we used to write down earlier. Now, Companies Act has given a new, this thing, what do you say, circular wherein they have specified that cash and cash equivalents will be replaced with cash and cash balance, cash and bank balance. It is cash in hand and cash at bank. So this will be your note number 3. Okay. Face of the balance sheet completed. This is known as a face of the balance sheet. Nishika, jaldi likho. Then we prepare notes to accounts. Done? Next, give the heading notes to accounts. Okay, अब आप क्या करोगे? Simply take a page, okay, and पेज पे पूरे एक ही पेज पे
just draw this particular rupees, the entire page. Okay, we are going to save time now. We are not going to be preparing each note separately. एग्जाम में अपने पास उतना टाइम नहीं होता, तो एक कॉमन फॉर्मेट बना देंगे और इसी में अलग अलग नोट्स बनाते चले जाएंगे. तो नोट नंबर 1 क्या है हमारा? शेयर कैपिटल. यहाँ लिखेंगे 1 शेयर कैपिटल. अंडरलाइन करना चाहते हो तो नॉट अ कंपल्शन. इसके बाद लेट्स स्टार्ट द नोट, है ना? इसी में नोट्स बनाते चले जाएंगे. सबसे पहले क्या लिखना है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी राइट हियर? ऑथराइज्ड कैपिटल. Okay, Nishika, authorized capital is the maximum capital company can raise from the public. तो सबसे पहले authorized capital का disclosure आता है. क्या हमें क्वेश्चन में authorized capital दे रखी है? It's not given in the question. So simply write down dash shares of rupees dash each. Blank. Double It's column. not given, it's okay if you don't try. You have to write it. This is a part of the command. If you don't write authorized capital, a check again. But it's Cut your marks. notes to account. नोट्स टू अकाउंट्स के ही मार्क्स मिलते हैं. फेस ऑफ द बैलेंस शीट के मार्क्स कम रहते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स के ही मार्क्स होते हैं. दे विल चेक नोट्स टू अकाउंट्स एंड दे विल, इफ योर नोट्स टू अकाउंट्स टोटल्स अप करेक्टली, देन ओनली यू विल गेट मार्क्स. नाउ नेक्स्ट थिंग इज इशूड कैपिटल. ठीक है, इशूड कैपिटल में dash shares of dash each. Now they given us issued capital. Issued shares दे रखे हैं ना? Yeah. 20,000 shares of rupees 10 each. So 2 lakh is the issued capital. Double underline. Issue मतलब कि कंपनी कितने इशू करना चाहती है. So issued capital is a part of authorized capital. Yes. Then we write down subscribed capital कि पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए. So public ने भी उतने ही सब्सक्राइब किए हैं. But public has not paid the entire money. We have received only money for up till the first call. Company has not called up the final call yet. तो उसके लिए हमें disclose करना पड़ता है. क्या disclosure होता है? The disclosure is like this. Subscribed and fully paid up capital. तो यहाँ पे subscribed and fully paid up capital में कुछ नहीं आने वाला. Reason being the company has not called up the final call. Okay, so we will not write down anything. It's totally blank. And then we have subscribed but not fully paid up capital. Okay, तो अब पब्लिक ने 20,000 शेयर्स तो अप्लाई किए, लेकिन कंपनी ने अभी तक 8 रुपीज़ ही कॉल अप किए हैं. सो 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, कॉमा रुपीज़ 8 कॉल्ड अप. Company has called up 8 rupees only till now. Okay, so 20,000 into 8 is how much? आप अपने बैंक अकाउंट का टोटल कर सकते हो. आपका जो बैंक अकाउंट है जर्नल एंट्री में वो इस अमाउंट पे टैली हो जाएगा. ट्राई इट आउट. टोटल ऑफ द बैंक अकाउंट कॉलम, जहाँ जहाँ आपने बैंक अकाउंट डेबिट किए हैं टोटल अप करो एंड चेक. 20,000 into 8 is how much? 1,60,000. चेक करो 1,60,000 पे टैली होता है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट. चलिए, इज इट टैली? सबसे पहले आप करोगे कैलकुलेटर लो. द फर्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, सेकंड बैंक अकाउंट डेबिट 59,700, थर्ड बैंक अकाउंट डेबिट 39,800 and fourth bank account debit
850. 350 आ रहा है. बट उसमें से क्या आपने कुछ ट्रांसफर किया है कहीं पे? प्रीमियम का पैसा मत लेना, प्रीमियम इज ऑलरेडी टेकन टू प्रीमियम. तो वो 850 में 50 रुपीज़ प्रीमियम भी है, प्रीमियम मत लेना. प्रीमियम हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में डालेंगे प्लस share that big capital reserve. ओ सॉरी 16350 आ रहा है ना, तो वो तो कैश एंड बैंक बैलेंस में जाएगा. सो सॉरी, दैट विल गो टू कैश एंड बैंक बैलेंस. ये 1,60,000 आपका कैसे टैली होगा? आपके शेयर कैपिटल के शेड्यूल, शेयर कैपिटल जो आपने क्रेडिट किया उस शेयर कैपिटल वाला आपका टैली हो जाएगा 160 पे, बैंक वाला आपका जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस में. बाय मिस्टेक आई टोल्ड यू क्या बैंक बैलेंस, बैंक का अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल से होगा. चेक करो, क्रॉस वेरीफाई. शेयर कैपिटल को आपने 60,000 से एक बार क्रेडिट किया है, फिर उसके बाद हमने शेयर कैपिटल अगेन 60,000 से क्रेडिट किया है, फिर अगेन आपने शेयर कैपिटल 40,000 से क्रेडिट किया, फिर आपने शेयर कैपिटल 800 से डेबिट किया और फिर 800 से क्रेडिट किया. सो दैट इज गॉन. सो सी the share capital total is coming to 1,60,000. so it will tally with this. शेयर कैपिटल वाला ऐसे टैली होगा. बैंक अकाउंट डेबिट वाला जो 16350 लिया हमने वो कहाँ जाएगा? दैट विल गो टू कैश एंड बैंक बैलेंस. ओके ओके, so this is done. Now go to the balance sheet and write here. What are you getting? 1,60,000 from the schedule, from the notes to account. So put it there. Put the total in the face of the balance sheet. Now go further. इस note को इसी note में लिखेंगे. Now note number 2 is reserves and surplus. So under reserves and surplus we have two items to be written: securities premium and capital reserve. Securities premium is how much? 50. Capital reserve is 300. So total 350. Take this total to the balance sheet. बैलेंस शीट में जाके यहाँ पे 350 लिख दीजिए और आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई. यहाँ पे लिखोगे आप 3,160,350 और जस्ट अभी आपने बैंक अकाउंट डेबिट का टोटल लिया which came to 160,350. तो एक्चुअली कैश एंड बैंक बैलेंस के लिए नोट नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा. इट्स नॉट अ कंपल्शन. डायरेक्टली पुट द टोटल और बना के लिख के दिया कैश एंड बैंक तो भी ठीक है. सो 2 नोट्स आर मोर. टैली हो गई बैलेंस शीट. यहाँ पे टोटल ले लेंगे वापस से. लेट्स टैली द बैलेंस शीट. 160. This is how the balance sheet should tally. Clear, Nishika? So you need to practice this. अभी ये क्या? This is not the entire balance sheet. This is just few things we have picked up from the balance sheet. So and you also start watching the recordings. Should I add you in the Telegram group? I'll let you know by afternoon. Okay, let me know. Okay. So accordingly we can proceed further. Done? Chalo, next. Come to the next question. Dinesh Limited. Okay, what's given over there is check. Dinesh Limited invited applications for issuing 10,000 equity shares of rupees 10 each. The amount was payable as follows: on application 1 rupee, on allotment 2 rupees, on first call 3 rupees, and second and final call remaining. So what is remaining on second and final call? Okay, so let's write down. This is illustration 23. ठीक है. So what is the total? Rupees 10 is the face value. What is the breakup of this rupees 10? Application rupees 1, allotment rupees 2,
First call rupees 3. And second and final call. How much? 4. 4. So 3 plus 2 plus 1 is 6. So 10 minus 6 is 4. Okay. Chalo, next. The issue was fully subscribed. So again we are not doing over subscription as of now. Ram, to whom 100 shares were allotted, failed to pay the allotment money. तो एक राम करके शेयर होल्डर है, इसको कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए? 100 shares were allotted. He failed to pay the allotment money and his shares were forfeited immediately. He did not pay the allotment money. The allotment money is not paid. And then immediately after allotment money, what is happening? Forfeiture is happening. Then Shyam, to whom there is another shareholder, Shyam, to whom we have allotted 150 shares. Failed to pay the first call money. So failed to pay first call. His shares were also forfeited after the first call. The first call के बाद इसका भी forfeiture कर दोगे आप. तो आपको ध्यान रखना है कि इसका forfeiture allotment के बाद करना है, इसकी forfeiture की entry first call के बाद करनी है. So twice we have to create forfeiture for Ram after the allotment money, for Shyam after the first call. Step by step जाना, ठीक है? No hurries, go step by step slowly. Then afterwards the second and final call was made. और कंपनी ने फिर forfeiture के बाद, ओके, अलॉटमेंट का जब forfeiture हो गया, अलॉटमेंट का ड्यू हो गया, अलॉटमेंट का forfeiture हो गया, फर्स्ट कॉल का ड्यू हो गया, फर्स्ट कॉल का पैसा ले लिया, फर्स्ट कॉल का forfeiture हो गया, आफ्टर दैट द कंपनी विल ड्यू द फाइनल कॉल मनी एंड रिसीव द फाइनल कॉल मनी. मोहन एक और शेयर होल्डर है. ओके, सो आई टोल्ड यू देयर बी मल्टीपल सिचुएशंस कमिंग. और अभी इसमें तो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, एग्जाम में तो ओवर सब्सक्रिप्शन ही आने वाला है. So a 10 marker question will be there wherein all these details will be there, cause in arrears, cause in advance, forfeiture, reissue and also over subscription will be there. So it's really going to be a complicated one for 10 marks. चलिए, मोहन, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो. जितना आप शुरुआत से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे. मोहन to whom 50 shares are allotted. उसका हमने 50 shares allot किए हैं. Failed to pay the second and final call. Gone. इसका भी forfeiture हो गया. Failed to pay second and final call. His shares were also forfeited. One more forfeiture entry after the final call. हर स्टेज के बाद अपने को forfeiture करना है. Cause in arrears debit करना है, cause in arrears credit करना है, cause in arrears debit, cause in arrears credit. अब इन दी एंड क्या हो रहा है? ऑब्वियसली जब forfeiture होगा तो री इशू तो होगा ही होगा, ऑलवेज. दोनों भाई बहन हैं, री इशू विल ऑलवेज बी देयर आफ्टर forfeiture. सो री इशू कितने पे करना है? ₹9 पर फुली पेड. सो ₹9 पे हम री इशू करेंगे. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. ठीक है, चलो साथ में करते हैं स्टेप बाय स्टेप. मेक अ जर्नल. Quickly make a journal, all of you. जर्नल में ओके. What is the first entry? Always bank to share application. So मुझे लगता है कि अभी इस एंट्री में किसी को डाउट है ना? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऊर्जा मुझे अमाउंट बताओ बेटा 10,000 टोटल। नहीं 10,000 is for share bank account to share application नहीं अमाउंट कितना लिखना है? in this one 10,000 होगा। 1 rupee अच्छा 1 रुपी ही है। सो 10,000 इंटू 1। ओके नरेशन लिख दीजिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैत्री यू टेल मी ट्रांसफर की एंट्री बताओ। share application account to share. In this question, have they specifically mentioned about equity shares? If they have given us equity shares in the question, make sure that we are writing here equity. And whenever the word equity shares or preference shares is not given in the question, then we do not write it specifically. Okay? Equity share application account debit to equity share capital account. Same amount 10,000 transfer हो जाएगा. There is no premium, there is no over subscription, nothing. Write down being application money transferred. Being application money transferred. Being application money transferred. Done? Krish, tell me for entry. Bank also values to equity share application. Equity share allotment. Third Yeah, entry. allotment. पहले अलॉटमेंट मनी तो ड्यू करो थर्ड एंट्री में। फोर्थ एंट्री होगी ना बैंक की। No, allotment. What did it be? Allotment. अलॉटमेंट टू कैपिटल। Capital. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। First due it and then receive the money. Okay. Equity share allotment account debit to equity share capital account. This will be 10,000 into 2. 20,000 से due कीजिए. Narration लिखो being allotment money due. Being allotment money due. Now take the money. And while taking the money, we need to remember that there is a shareholder, Ram, who did not pay us allotment money and his shares were immediately forfeited. Okay, so after taking the allotment money, we need to forfeit the shares of Ram. तो पहले राम का कॉल्स इन अरियर्स क्रिएट कीजिए. कितने शेयर्स हमने दिए थे राम को? 100. So राम का कॉल्स इन अरियर्स 100 से क्रिएट होगा. 100 into how much he was supposed to pay? 2 rupees. So 200 हो गया आपका calls in arrears. बाकी कितना पैसा आ रहा है? 10,000 में से 100 दिया तो कितना बचा? 20,000 में से ना 20,000. तो 90,000 90,000 10,000 टोटल शेयर्स है ना? अरे शेयर्स Shares. 10,000 शेयर्स में से गया 100 शेयर्स. ऐसे 10,000 में से 100 गया तो कितना बचा? 9,900. एग्जैक्टली 9900. 9900 into कितना पैसा आया? 2 rupees के हिसाब से. So 9900 into 2 is how much? 19,000. 800 होगा ना भाई? हाँ। 99 टू क्योंकि टैली करना ना अपने को 20,000 का. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. इसको रिवर्स कर दो है ना?
ये जो यहाँ पे डेबिट किया है इसको क्रेडिट कर दो और आप देख सकते हो कि आपका 20,000 डेबिट हो गया। तो टैली होना चाहिए हमारा डेबिट क्रेडिट एवरी टाइम। ठीक है, चलो नरेशन लिख दो। being allotment money received except on 100 shares, being allotment money received except on 100 shares। अब इसके बाद क्या करना है, राम के शेयर्स को फॉरफीट करना है। 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, कंपनी इज फॉरफीटिंग हिम इमीडिएटली। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी as of now I'm not doing the questions which is related to securities premium, because first I want to get hold over the basic ones without premium, without over subscription। clear? तो अभी हम प्रीमियम नहीं लेते। In the next lecture I will go to little advanced questions। and yes, Monday we will keep a holiday because it is Eid now on Monday, so I will see you all on Wednesday। College starts on Tuesday. yeah, So, and your college is also starting from Economics Tuesday। test won't be there on Monday. Economics test won't be there on Monday. अच्छा, आपका मंडे को इकोनॉमिक्स टेस्ट था, so I think ma'am will postpone it to the Wednesday। पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, चाहे मंडे दे चाहे वेंसडे दे, because anyways your school is starting from Tuesday, then you won't get that much of time, no? Yeah. So it's better you prepare during the weekend, okay? And also keep solving accounts also side by side। issue of shares की practice करना चालू कर दो। Okay, share capital account debit to Share for future. share for future to calls in arrears। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, 100 into the called up value। What is called up value? Called up value is application plus allotment, 1 plus 2, that is 3, so 300 to calls in arrears। to calls in arrears started raining। calls in arrears जितने से डेबिट किए थे उतने से क्रेडिट कर दो, 200। so what is the balancing figure, 100। obviously आपको 100 into 1 rupees आया और आपको 100 into 2 rupees नहीं आया। जो पैसा आता है वो शेयर फॉरफीचर में जाता है, जो पैसा नहीं आता है वो कॉल्स इन अरियर्स में जाता है। मनी रिसीव्ड गोज टू शेयर फॉरफीचर, मनी नॉट रिसीव्ड गोज टू कॉल्स इन अरियर्स। करेक्ट है निशिका, आपको समझ आ रहा है पक्का? ओके, सो नाउ निशिका विल टेल मी द फिफ्थ एंट्री। चलो बताओ क्या करोगे। अलॉटमेंट का ड्यू हो गया, रिसीव हो गया पैसा, फॉरफीचर भी हो गया राम का। Share for future to capital। अभी नहीं बेटा, वो सबसे एंड में करते हैं, दैट इज डन ऑन 31st March। फॉर द एंटायर ईयर वी डू इट इन द एंड, वो अभी नहीं करना क्योंकि अभी 2 और फॉरफीचर करेंगे ना, उसके बाद करेंगे। अभी आपको फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करना है। Share first। बंद करो क्या थोड़ी देर के लिए, फीलिंग करो। Share first call to share capital। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, परफेक्ट। share first call account debit, okay, write down the word equity also, equity share first call account debit, please keep writing the word equity, okay, equity share capital, equity share first call account debit। कितने से डेबिट करोगे, अमाउंट भी बताओ। 10,000 into, will it be 10,000? You forfeited the shares. आपने 100 शेयर्स कैंसिल कर दिए, so now you are left with only 9,900। तो कितने से ड्यू करोगे इसको, 9,900 into first call is 3, 29,700। that's how much, 29,700। 29,700। ये सबको समझ आया? और फीचर के बाद जब हम नेक्स्ट कॉल ड्यू करते हैं तो वो शेयर्स माइनस होते होता है, because this is the first time now we are doing it, okay, to what, to share capital account, to equity share capital account। लगा दो। नल इंक्रीज ही चल रही है ना।
He's feeling cold. Could be something. But it's pretty pleasant today anyways, it's raining. But अंदर नहीं लगता because the windows are shut now, so you feel a bit It's suffocating. yeah, it is suffocating. We need to turn it on. चाहे वो 26 पे रहे चाहे 27 पे रहे, तो एकदम से ऐसा घुटन सी महसूस होने लग जाती है. Okay, write down the narration. Here also please write down narration. Here also narrations on your own. आदित्य नेक्स्ट एंट्री बताओ. Bank account debit, calls and areas account debit to equity first. Exactly. अभी किसका calls and areas create करना है? अब हमें शाम का शाम. calls and areas create करना है on first call on 150 shares. Yes. Amount बताओ. 250 calls and areas. Bank account debit, calls in arrears account debit to equity share first call account. So you are receiving money on 9900 and then you are not receiving money on further 150. First call कितने से ड्यू करना किया हमने 3 रुपीज से, 3 रुपीज के हिसाब से पैसा लो. Bank account debit 29,250. Balance Calls and arrears कितना है? 400. And tally हो गया 29,700. Yes. So this you credited with 29, debited with 29, now we credit with 29,700 and 29,700 का bifurcation हमें मिल गया. Write down the narration again. Narration लिखते जाओ. Being equity share first call money received except on 150 shares. Now Aaron, tell me what are we supposed to do? अब शाम ने पैसा नहीं दिया हमें 150 शेयर पे, तो कंपनी शाम का फॉरफीचर करे. इमीडिएट फॉरफीचर, जैसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, उसका इमीडिएट फॉरफीचर करना है. टेल मी द एंट्री फॉर फॉरफीचर. Very good. Equity share capital account debit. Then very good. To calls in arrears. To share forfeiture. Perfect. Amount भी बता दो. Equity share capital को कितने से डेबिट करेंगे? कितने शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं हम? देखो बोर्ड पे देखो. 150 शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं. इनटू कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, कौन सी स्टेज के बाद फॉरफीट कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद. तो फर्स्ट कॉल तक कितना है? 1 + 2 + 3 6 रुपीज. तो 150 × 6 कितना हो जाएगा? 900. उसके बाद कॉल्स एंड अरियर्स को एग्जैक्टली रिवर्स कर दोगे पूरा का पूरा, और बाकी का बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे. और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि 450 450 कैसे आ रहा है. 150 × 3 का पैसा नहीं आया, 150 × 3 का पैसा आ गया. Sham has paid on application and allotment, so 1 + 2. And Sham has not paid the first call, so 3 rupees. So 3 rupees he didn't pay, 3 rupees he paid. Correct? And even if you don't cross verify, it is okay. वो आपकी बैलेंसिंग फिगर हमेशा करेक्ट ही आती है. What happened? पानी आपको Is it dropping on the wood? Good. Now it's going down. तो ऑफ करो क्या? I don't know why it's doing. देखते हैं maybe because of the rain और ज़्यादा या ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तो पानी टपकता है. Okay. Narration. Being 150 being forfeited of 150 shares or 150 shares forfeited
Next, after this, now what are we going to do? The 8th entry. Share, Second and final call को due कर देंगे. Okay, do it. Equity share. Second and final call. Account debit. To equity share capital account कितने से due करना है? 39 What into what? 9750. Very good. Into 4. 4 rupees है ना? हाँ ठीक है 4 हमने balance से figure find out करेंगे. Okay, again further you'll have to reduce this 9900 with 150. Okay, 150 shares are forfeit कर चुके हो. So 9750 into 4. How much now? 9750 into 4. 39,000. 39,000. Write down the narration. Write down the narration on the cue. Next. Bank also. Share, equity shares. Yes, take the money. Again calls in arrears. Calls in arrears for whom? For Mohan. मोहन ने 50 शेयर्स का पैसा नहीं दिया है ऑन सेकंड कॉल एंड देन शेयर वर forfeited. So bank account debit. Calls it arrears account debit to equity share. Second and final call. Account. बताइए 39,000 का bifurcation. How much? 38,000. 800. Okay, and 200. okay. 50 into 4 and 9,700 into 4. Clear? Keep the hold on the numbers till the end. ऐसे बीच में से confuse मत हो जाओ, छोड़ मत दो उसको, अरे नहीं समझ आ रहा. Don't do that. जैसे जैसे जो एंट्री होती जा रही है उस हिसाब से आप नंबर्स को चेंज करते जाइए. Okay, the initial number was 10,000 shares. Now we have reached up to 9750. Now again out of 9750, 50 is not received. Now you're going to forfeit that 50. Correct? चलिए forfeiture की एंट्री बताइए मुझे निशिका. Share capital to share forfeiture to cause money. अमाउंट बताओ इस केस में. Tell me the amounts. No? Okay. How many shares are you forfeiting? Look at the board. Try to understand. जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं होगा. कितने शेयर्स का पैसा नहीं आ रहा हमें? 50. तो आपको कितने से रिवर्स करना है? जो शेयर का वो पैसा नहीं देगा उतने ही शेयर्स को forfeit करेगा ना. See, look here. When you are forfeiting, you have to see that what is the money, on what shares the shareholder hasn't paid us. Now, when we forfeited Shyam's share, we created cause and arrears on 150 and we created forfeiture also on 150. When we did it for Mohan, we created cause and arrears for 50 and we forfeited him for 50. So now we'll be forfeiting him for 50. For Shyam, it was on 100 similarly, right? So 50 शेयर्स का पैसा वो नहीं दे रहा तो 50 शेयर्स का ही forfeiture होगा ना. जितने शेयर्स का पैसा नहीं देगा उतने ही शेयर्स कंपनी कैंसिल करेगी. इसके अलावा और कुछ नहीं होगा. तो 50 पे forfeit कीजिए. Called up value. What is the called up value? The stage after which you are forfeiting is the called up value. कौन सी स्टेज के बाद forfeiture कर रहे हो आप? श्याम का और मोहन का second call. So what is the value of the second call? 10 rupees. Application plus allotment plus first call plus
सेकेंड अकाउंट टोटल 10 रुपीज़, उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज द कॉल्ड अप वैल्यू नाउ. 15 to 10 कितना बन गया? 500. क्लियर? कॉल्स एंड अरियर्स जो आपने अभी डेबिट किए थे शाम के, उतने ही आप रिवर्स कर देंगे एंड द बैलेंसिंग फिगर हो गया, खत्म. आपको मेनली ये 500 पे फोकस रखना है. और 500 कैसे आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड कहाँ से आएंगे? That's given in the question to you. It's given to us that whatever money he is not paying us, those many shares we are forfeiting. Whatever shares का पैसा he is not paying us, we will forfeit that. So तीनों का हमने वैसे ही किया है. जितना हमने कॉल्स एंड अरियर्स क्रिएट किया था उतना ही फॉरफीचर हो रहा है. So now when you go to the advanced questions you will observe कि कभी-कभी हम कॉल्स एंड अरियर्स 100 शेयर्स पे क्रिएट करेंगे, बट हम फॉरफीचर 70 शेयर्स का करेंगे या 80 शेयर्स का करेंगे, ऐसे भी हो सकता है. So you have to be very very careful while reading the question. ये forfeiture कितने पे हो रहा है? Next, this is done. Now, once all the final calls are done, once all the forfeiture entries are done, now you're going to reissue and then transfer the share forfeiture to capital reserve. तो reissue की क्या entry होती है? reissue में पैसा आता है. So bank account debit, very good. अब रीइश्यू में हम शेयर फॉरफीचर को डेबिट करते हैं. कब शेयर फॉरफीचर को डेबिट करते हैं हम? When do we debit share forfeiture? If you are reissuing at a discount, debit. अब देखो जाके क्या हम प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहे हैं या हम डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हैं? How will you check? Look, go and check in the question. ₹9 per share fully paid up. आप कब फॉरफीट कर रहे हो? कौन कौन से शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो? पहले तो ये चेक करो. ऑल ऑफ ओके. और आप कौन सी स्टेज के बाद रीइश्यू कर रहे हो? फाइनल कॉल के बाद. तो टोटल वैल्यू इन शेयर्स की क्या बनती है? 10 रुपीज. व्हाट इज द पेड अप वैल्यू? पेड अप वैल्यू इज द कॉल्ड अप वैल्यू. व्हाट इज द कॉल्ड अप वैल्यू? 10 रुपीज इज द फाइनल कॉल्ड अप. Okay, you always have to check the call book value. But you are reissuing at 9 rupees. So you are reissuing at 1 rupees discount. It's clear cut given in the question. 9 rupees पे आप reissue कर रहे हो 300 shares. How do you get 300? From here. 300 कैसे आया? 100 for Ram, 150 for Sham, and 50 for Mohan. So that gives you 300. So 300 shares are being reissued at a reissue value which is 9 rupees. That means we are reissuing at a discount of 1 rupee. यहाँ पे आप share forfeiture को debit करें. Please do not debit the account share discount account. गलत हो जाएगा. Not allowed. Reissue में कभी भी share discount नहीं होता है. Reissue में आप share forfeiture को utilize करते हैं. Share forfeiture आपके पास profit पड़ा हुआ है. फालतू में प्रॉफिट पड़ा हुआ आपके पास, यूटिलाइज करो ना उसको. क्यों आपको लॉसेस बेयर करने, क्यों शेयर डिस्काउंट अकाउंट अलग से क्रिएट करना है, क्यों उसको एक्सपेंसेस में ट्रांसफर करना है, क्यों प्रॉफिट्स रिड्यूस करने हैं? नॉट रिक्वायर्ड. द इनकम टैक्स ऑफिसर विल नॉट अलाउ यू. ही विल से दैट यू ऑलरेडी हैव कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल प्रॉफिट्स लाइंग डाउन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यूटिलाइज दैट. सो शेयर फॉरफीचर को आपको सिंपली डेबिट करना है. कितने से डेबिट होगा? जितने से डिस्काउंट है, 1 into 300. So 9 3s are 2700, 3 1s are 300. To share capital account, to equity share capital account 3000. And how do we get the 3000? 300 into 10 into the total face value, into the total called up value, into 10. Clear? So 10 rupees का शेयर 9 rupees पर ही इशू हुआ है. अगर आपने वो करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया, एंट्री कौन? आपको समझ ही नहीं आ रहा. अरे 9 रुपये किसे कंपेयर करें? गया काम हो गया. 9 रुपये किसे कंपेयर करना है? कॉल्ड अप वैल्यू. कॉल्ड अप वैल्यू कहाँ से आएगी? जिस स्टेज के बाद, जब फाइनल स्टेज में आप रीइश्यू कर रहे हो, फाइनल फॉरफीचर कब किया आपने? फाइनल फॉरफीचर आपने 10 रुपीज़ के बाद किया. सो आप अज्यूम करोगे 10 रुपीज़ कॉल करता है. ओके.
You cannot assume called up value for different cases separately. अरे मैम राम का तो हमने forfeiture allotment की बात किया था, तो उसकी तो called up value अलग हो गई. श्याम का तो forfeiture हमने अलग फर्स्ट कॉल के बाद किया था. मोहन का forfeiture हम सेकंड कॉल के बाद कर रहे हैं, तो सबकी called up value different है. You have to take one paid up value, one common value. In such cases, you simply take face value. 10 rupees face value, 10 rupees paid up value. Clear? So this can only come with practice. देखिए being shares, forfeited shares reissued. Being forfeited shares reissued, and now whatever amount is remaining in the share forfeiture account, that you're going to transfer to capital reserve. तो share forfeiture देखो, share forfeiture को आपने कितने से credit किया? All of you look at the board. सबसे पहले आपने share forfeiture credit किया 100 से, then plus, then 450, so 550 plus Yeah. plus 300, 550 plus 300, 850. 850 में से आपने reverse किया, minus 300, 850 minus 300 gives you 550 again. So share forfeiture to capital reserve. इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है. Right? You can still write down the bracket if you want. Use the total. 100 plus 450 plus 300. 100 plus 450 plus 300 minus 300. देखिए, रिलेशन लिखो. Being profit on shares reissued, transferred to capital reserve. So it's like ये आपका बचा हुआ प्रॉफिट है. ये आपका बचा हुआ प्रॉफिट है. आपने शेयर फॉरफीचर को मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट किया और इस शेयर फॉरफीचर को आपने री इशू करते वक्त यूटिलाइज किया. फिर री इशू करने के बाद फाइनली आपके पास 550 का प्रॉफिट बचा जो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें. सो दिस इज योर प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स. This is always your profit on reissued share, which is transferred to capital reserve. Okay. The next illustration 24. 4 है ना? That's your homework. A Limited makes an issue of 10,000 equity shares of ₹100 each, payable as follows. Okay, so there is cause and arrears, there is forfeiture, there is reissue. But there is no oversubscription, there is no premium, nothing. Just a simple question how we have been doing. And also in this question you have to prepare the balance sheet as well. Okay? Now in the next lecture I will be starting these type of questions with oversubscription. So today we have